नमस्ते दोस्तों। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम भारतीय शासन के एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर इग्नोर कर दिए जाने वाले हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी शॉर्ट में कहें तो DPSP। सच कहा जाए तो ये महज कुछ पन्नों के नियम नहीं है, बल्कि ये एक नए और आज़ाद भारत को खड़ा करने का पूरा ब्लूप्रिंट है। यही हमारे संविधान की असली दार्शनिक नींव है। इस एक्सप्लेनेर में हम इस पूरे सफर को 5 क्लियर हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, DPSP का इंट्रोडक्शन। दूसरा, इसकी आलोचनाएं। तीसरा, अधिकारों के साथ इसका ऐतिहासिक टकराव। चौथा, इसका जमीनी क्रियान्वयन। और आखिर में इन दोनों के बीच का बुनियादी अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, DPSP का परिचय यानी द ब्लूप्रिंट। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि नीति निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या भला। देखिए, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका जिक्र मिलता है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्हें आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। ये राज्य के लिए ऐसे संवैधानिक निर्देश हैं जो गैर न्यायोचित हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो अगर सरकार इन्हें लागू ना भी करे तो कोई इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की एक अनोखी विशेषता बताया था। इनका मुख्य मकसद देश में एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर डेमोक्रेसी बनाना है, न कि अंग्रेजों के जमाने जैसा कोई पुलिस स्टेट। इन तत्वों का महत्व कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक बार कहा था कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार मिलकर संविधान की अंतरात्मा बनाते हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ स्याही से लिखे शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान की धड़कती हुई रूह हैं। मजेदार बात यह है कि संविधान में इनका कोई फॉर्मल क्लासिफिकेशन या बंटवारा नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इनकी विचारधारा को देखकर हम इन्हें 3 मुख्य पिलर्स में बांट सकते हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले आता है समाजवादी स्तंभ। इसका सीधा सा मतलब है देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय लेकर आना। राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि आय, रुतबे और मौकों की जो असमानता है उसे खत्म किया जाए। चाहे पुरुष हो या स्त्री, समान काम के लिए सबको समान वेतन मिलना चाहिए। सभी मजदूरों को एक डिसेंट लाइफ और निर्वाह मजदूरी मिले। और सबसे अहम बात, देश का पैसा और संसाधन सिर्फ कुछ ही लोगों की जेबों में ना भरे, बल्कि उनका सही और समान बंटवारा हो। दूसरा अहम ढांचा है गांधीवादी स्तंभ। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के जो सपने थे उन पर टिका है। इसमें भारत को गांव के स्तर से मजबूत करने की बात कही गई है, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन करना ताकि वो खुद की सरकार चला सकें, गांव में कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, इसके अलावा समाज के पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना, और हाँ, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले नशे, शराब पर पाबंदी और गाय बछड़ों जैसे दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना भी इसी का हिस्सा है। तीसरा और आखिरी है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो काफी फॉरवर्ड थिंकिंग है। इसमें सबसे चर्चित मुद्दा है पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करना। इसके साथ ही बचपन की देखभाल और बच्चों की फ्री एजुकेशन, पर्यावरण, जंगलों और वाइल्ड लाइफ को बचाना और न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखना, ये सब इसी मॉडर्न अप्रोच वाले पिलर का हिस्सा है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, DPSP की आलोचना। जाहिर सी बात है, जब भी कुछ नया बनता है तो क्रिटिसिज्म तो होता ही है। क्योंकि ये तत्व गैर न्यायोचित थे, इसलिए KT शाह ने एक बड़ा ही जबरदस्त और तीखा तंज कसा था। उन्होंने इसे एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक तभी करेगा जब उसके पास संसाधन होंगे। मतलब ये वादे सुनने में तो बहुत शानदार हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने की कोई कानूनी गारंटी ही नहीं है। आलोचकों ने इसे कई तरह से घेरा। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इनमें कोई लीगल पावर नहीं थी। TT कृष्णमाचारी ने तो इन्हें भावनाओं का कूड़ा घर तक कह डाला। कुछ लोगों ने कहा कि ये बस उन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह हैं जो जनवरी खत्म होते होते टूट जाते हैं। इसके अलावा इन्हें बिना किसी लॉजिक के बेतरतीब ढंग से रखा गया माना गया। कहीं मॉडर्न बातें हैं तो कहीं बहुत पुरानी। कुछ जानकारों को ये 19वीं सदी की पुरानी सोच से प्रेरित लगे। और सबसे बड़ा डर ये था कि भविष्य में इन निर्देशों की वजह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या फिर केंद्र और राज्यों के बीच भयंकर संवैधानिक टकराव हो सकता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर,
राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव्स। ये भारतीय इतिहास में विधायिका और न्यायपालिका के बीच हुई सबसे बड़ी कानूनी जंग की कहानी है। ये सवाल कई सालों तक गूंजता रहा कि आखिर बॉस है कौन, मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व। 1951 के चंपकम दुरायराजन केस में कोर्ट ने कहा कि भाई जीत मूल अधिकारों की होगी। फिर 1967 के गोलकनाथ केस में तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि संसद मूल अधिकारों को छू भी नहीं सकती। इसके जवाब में संसद ने 1971 से 76 के बीच ताबड़तोड़ कई संशोधन कर डाले, 24वां, 25वां और 42वां संशोधन, ताकि निर्देशक तत्वों को ऊपर रखा जा सके। माहौल एकदम गर्मा गया था। लेकिन फिर 1980 में आता है मिनर्वा मिल्स केस, जिसमें इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स ही बदल दिया। इस मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ही खूबसूरत बात कही। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स असल में एक ही रथ के दो पहिए हैं। कोई भी पहिया दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। दोनों के बीच का ये बैलेंस ही हमारे संविधान का बेस है। एक को लागू करने के लिए आप दूसरे को कुचल नहीं सकते। भाग 4, जमीनी हकीकत में इनका क्रियान्वयन। अभी तक तो हमने सिर्फ कानूनी बहस देखी, लेकिन क्या सच में कभी कुछ बदला? बिल्कुल बदला। इसे एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। पहला स्टेप, संविधान के अनुच्छेद 40 में एक निर्देश था कि ग्राम पंचायतें बननी चाहिए। दूसरा स्टेप, इसी को आधार बनाकर संसद ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन पास किया। और तीसरा स्टेप, रिजल्ट हमारे सामने है। देश भर में एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। मतलब वो जो थियोरी थी वो असल हकीकत बन गई। और बात सिर्फ पंचायतों तक सीमित नहीं है। कानूनी तौर पर बाउंड न होने के बाद भी इन तत्वों ने हमारे देश की कई बड़ी नीतियों को जन्म दिया है। मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बने। पर्यावरण को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। सबको न्याय मिल सके, इसके लिए लोक अदालतों की शुरुआत हुई। और पैसों के सही बंटवारे के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बड़े लेवल पर लैंड रिफॉर्म्स हुए। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव्स के बीच का असल और बुनियादी अंतर। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। मूल अधिकारों को थोड़ा नेगेटिव माना जाता है क्योंकि वो सरकार को कुछ चीजें करने से रोकते हैं। ये कोर्ट से लागू कराए जा सकते हैं और इनका काम है देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र बनाना। ये मूलतः एक व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व पॉजिटिव हैं क्योंकि ये सरकार को काम करने का निर्देश देते हैं। ये कोर्ट से लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन इनका विजन बहुत बड़ा है, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये किसी एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे समाज के भले की बात करते हैं। अब इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल मन में आता है, क्या कोई देश सच में एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है अगर उसके सबसे अहम सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य ही कानूनी तौर पर लागू न किए जा सके? आज़ादी और आर्थिक न्याय के बीच का ये जो बैलेंस है ना, ये शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। ये सोचने वाली बात जरूर है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से ये पूरा संवैधानिक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली बार। All right, let's jump right in and uncover the foundational blueprint of the Indian Constitution. Today in this explainer, we're tackling a genuinely fascinating topic that bridges the gap between the lofty, ideal vision of nation building and the incredibly complex reality of actually governing on the ground. We are looking at the directive principles of state policy. Basically, we're going to explore the exact instructions given to a newly independent nation on how to build a fair, just, and equitable society. You know, Dr. B.R. Ambedkar didn't just view these principles as mere suggestions or nice-to-have background text. He proudly declared them a novel feature of the Constitution. In fact, if you ask constitutional scholars today, they'll tell you that along with fundamental rights, these principles are literally the soul and philosophy of the entire document. They represent the ultimate goals of the nation. So, where do these live? You'll find the directive principles detailed in Part 4 of the Constitution, spanning Articles 36 to 51. And what's really cool is that India didn't just invent this concept out of thin air. The framers actually borrowed it straight from the 1937 Irish Constitution. And get this, the Irish had taken it from the Spanish. The whole point written into these guidelines was to radically transform India from a colonial police state into a modern welfare state, meaning a state that is actively working its hardest to ensure social and economic justice for every single citizen. So here is our roadmap for today's explainer.
We're going to break this down into 6 quick steps: an introduction, how we classify these principles, the criticisms they faced, the massive courtroom dramas they sparked, the real-world implementation, and finally, how they differ from fundamental rights. Starting off with Section 1, Introduction to Directive Principles. Let's look at these guidelines for a welfare state. Basically, think of these as direct constitutional instructions. Whether you're the central government, a state government, or a local authority, when you draft laws or roll out policies, you're supposed to keep these principles front and center to establish true economic and social democracy. But, and this is a massive catch, they are non-justiciable, meaning if the government fails to provide these things, you can't just drag them into court to enforce them. However, it's not like the courts ignore them. The Supreme Court actually relies on them as a guiding light. If a law is challenged, judges will often check if it's trying to implement a directive principle to figure out if it's constitutionally valid. So while a judge won't force the government's hand, these principles place an absolutely massive moral and political obligation on the authorities. Moving right along to Section 2, Classification of Directive Principles, the 3 ideological paths. Now, officially, the Constitution itself doesn't actually group these principles into neat little categories. It just lists them out. But constitutional experts universally divide them into 3 distinct ideological paths to help us wrap our heads around this huge vision. And looking at this breakdown, the blueprint is just stunning. It's like a giant puzzle. First, you have the socialist principles, which focus heavily on social and economic justice. We're talking equal pay for equal work, free legal aid for the poor, the right to work. Then, you have the Gandhian principles. These directly reflect the Reconstruction programs Mahatma Gandhi championed during the freedom struggle. So things like empowering village panchayats, promoting cottage industries, and protecting agricultural foundations. And finally, the liberal intellectual principles. These focus squarely on modernity and progress. This is where you see the push for a uniform civil code, free and compulsory education, and protecting the environment. It is an incredible balancing act of 3 totally different worldviews, all unified into one national framework. Which brings us to Section 3, Criticism and Reality. Let's hear what the skeptics had to say. Okay, I absolutely love this quote from K.T. Shaw. It is such a vivid metaphor that perfectly captures the profound frustration of the critics back then. Because these principles are non-justiciable, because they lack that legal bite. Critics felt they were essentially post-dated checks. Sure, the Constitution promises equal pay and the right to work, but it's only payable if the government actually has the money in the bank to do it. Without legal enforcement, many people feared these were just going to be empty promises. So what were the main gripes? Well, first off, that total lack of legal force made some dismiss them as mere pious superfluities. Second, people argued the arrangement was totally illogical. They felt it was mashing together deeply modern concepts with very archaic traditional ideas without any scientific structure. Third, critics like Sir Ivor Jennings called them overly conservative. He argued they were leaning way too hard on 19th century British Fabian socialism and questioned how relevant that was going to be for a 21st century India. And finally, the most dangerous critique for sure, the fear of constitutional conflict. Scholars warned that if a prime minister pushed a law violating these principles, the president might just reject it, claiming the principles are fundamental to the country's governance. They were terrified this would trigger massive structural clashes. Next up, Section 4, Fundamental Rights versus Directive Principles. Let the courtroom drama begin. Now really think about this for a second. Fundamental rights are guaranteed to you, the individual, and you can enforce them in court. Directive principles are duties of the state for the benefit of the whole community, but they aren't legally enforceable. So, what happens when the government passes a law to implement a directive principle? Let's say taking away land to redistribute it to the poor, but that directly violates a citizen's fundamental right to property. Who wins that fight? This wasn't just a minor disagreement. This was a high-stakes game of constitutional chess played out over 30 years. Starting in 1951 with the Champacum-Duray-Rajan case, the Supreme Court ruled that fundamental rights are supreme and directive principles have to take a back seat. But Parliament fought back, amending the Constitution to push through land reforms. Then, in 1967, the Goloknev case completely shook things up. The court ruled Parliament absolutely cannot touch fundamental rights, even to implement directive principles. Parliament's reaction? In 1971, they passed the 24th and 25th Amendments, boldly asserting, yes, we can amend rights, and even created a way to give directives complete supremacy over key fundamental rights. The tension was literally at a breaking point. Until 1980.
And it all came to a head in the landmark Minerva Mills case. The Supreme Court stepped in and basically struck down the absolute supremacy of directive principles, establishing this beautiful metaphor. They said fundamental rights and directive principles are two wheels of the same chariot. You just can't have one without the other. While fundamental rights do technically hold higher legal ground, Parliament can amend them to implement directive principles, as long as they don't destroy the basic structure of the Constitution. Finally, a strict workable balance was restored. Okay, Section 5, Implementation of Directive Principles. Let's look at the ground reality. Because despite all that talk about them being post-dated checks, these guidelines have actually wielded some serious real-world power. Since 1950, successive governments have genuinely used this blueprint. To chase economic democracy, they set up the Planning Commission. For social justice, we saw massive land reforms to abolish the zamindari system and redistribute land. That Gandhian dream of village republics? It became a constitutional reality with the 73rd Amendment and the Panchayati Raj. Environmental directives birthed strict wildlife and forest conservation acts. And to hit those socialist principles of equal justice, they passed laws to provide free legal aid and set up lok adalats for quick dispute resolution. So this blueprint is very much alive in the laws governing us today. And finally, Section 6, Major Differences Between the Two. Let's draw a clear contrast. If you want to understand the genius of the Constitution's design, just look at them side by side. Fundamental rights are mostly negative. Actually, scratch that. Negative sounds bad. They act as a prohibition. They tell the state what it cannot do to you, like restrict your free speech. They are enforceable in court, aim for political democracy, and are fiercely focused on protecting you, the individual. Directive principles, on the flip side, are positive. They require the state to actively do things, like create jobs or provide education. They aren't enforceable by courts, but they aim for social and economic democracy, focusing entirely on uplifting the entire community. One shields the individual from the state, while the other tasks the state with building a better society. So, the Constitution gave us the blueprint, fundamental rights give us our voice, and the directive principles give us the vision for a fair society. But here's the million-dollar question to leave you with. As you look around at the economic disparities, the environmental challenges, and the ongoing social reforms today, have we truly achieved that perfect balance the framers dreamed of? Take this knowledge, look at the world around you, and evaluate how this massive constitutional experiment is playing out in reality. Keep asking those big questions, and I'll see you in the next explainer.